थैंक यू प्रभु. So, इसकी बात हो रही है, the foolish with poor fund of knowledge cannot know the transcendental nature, yeah, of the forms, names, and activities of the Lord. So, who is playing like an actor in a drama, right? तो कृष्णा हम सबको वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक्टर जैसे ड्रामा में करता है, तो हम लोगों को उनका एक्चुअल नेचर, उनकी जो ट्रांसीडेंटल नेचर है वो समझ में नहीं आती. Because we have fund knowledge, we don't know what he's doing. For example, अगर अमिताभ बच्चन एक्टिंग कर रहा है उसमें मूवी में, राइट, और उसके बाद जो भी उसकी उसमें हो रहा है, और जो भी मान लो उसको एंग्री यंग मैन दिखाया है, ठीक है, तो हमें तो यही लगेगा कि भैया एंग्री यंग मैन है ये तो अमिताभ बच्चन, तो ही उसकी उसकी जो ट्रू नेचर है, जो कि उसके घर में अपने बीवी बच्चों के साथ है, जो एक्चुअल में हिज ट्रू नेचर वी वोंट कम टू नो, राइट, unless we know that person personally, we interview him or we actually meet with this with that person, or whatever, by just by looking at his one of his films we won't come to know about him, right? So same is the case with this. अगर हमें सुपरफिशियली पता चलेगा कि हाँ कृष्णा ने ये उठाया था, गोवर्धन उठाया था, stuff like that, right? So we won't able to know him personally, we won't उसकी उनकी ट्रांसीडेंटल नेचर के बारे में हमें नहीं पता चलेगा, राइट? जैसे मेरे दीदी छोटे थे, वो मम्मी पापा बताते हैं कि उनको ना मूवी दिखाने लेके गए, तो वहां पे अमिताभ बच्चन मर गया, तो दीदी छोटे थे तो वो रोने लगे, बोले कि नहीं यार ये मर गया, ये तो एक्चुअल में मर गया. तो फिर उनको वो दोबारा थिएटर लेके गए, दोबारा उनको मूवी दिखाई कि यार देखो ये नहीं मरा, ये एक्चुअल में जिंदा है, ये दोबारा एक्टिंग कर रहा है, देखो. तो वही चीज हमारे साथ है. अगर हमारे पास वो लिमिटेड नॉलेज होगी, जैसे उसने कहा है ना तभी, कि जैसे एज द जगलरी ऑफ as the jugglery of the magician is a mystery to the children, वैसे ही हमारे साथ है. तो जो भी म्यूजिशियन करता है बच्चे को समझ में नहीं आता है, ऐसे ही जो ड्रामा कर रहे हैं वो हम बच्चे ही हैं उनके सामने, हमें वो ऐसे समझ में नहीं आएगा. कैसे समझ में आएगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्स में देखेंगे, राइट? तो हमें लगता है कि अ, हमें हमें बहुत कुछ पता है, राइट? अब वो, और जब कृष्णा एक्टिंग कर रहे हैं, राइट, तो कृष्णा एक्टिंग भी एकदम टॉप मोस्ट, राइट, ही इज द एक्सट्रीम, राइट. एक्टिंग करेंगे तो टॉप मोस्ट करेंगे, रिनंसिएट होंगे तो तब भी एवरीथिंग ही इज इन फुल, राइट. सो तो जब वो एक्टिंग करेंगे तो हम पकड़ पाएंगे उनको? नेवर. हमें लगता है कि हम टोपी पहना देंगे उनको, वो सबसे बड़े टोपी मास्टर हैं, उनको कोई टोपी नहीं पहना सकता, राइट. हमें लगता है कि हम सुबह उठ के वो माला पे हाथ घुमा के अपना, ठीक है, 2 घंटे 1.5 घंटा, उसके बाद हम सारा दिन कुछ भी करें, कृष्णा को पता नहीं चलेगा हमने, क्योंकि सुबह वो 16 माला कर ली है, दैट्स इट. उसके बाद हम माया में डूब जाएं पूरी तरह, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट नहीं, एक्चुअली ही इज लुकिंग एट अस, ही इज विटनेसिंग एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, राइट, व्हिच इज इनसाइड आवर हार्ट. एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन एक्चुअली, राइट. ब्रह्म संहिता में बोला है उनको कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि ईश्वरा परमा कृष्णा. He is the Param Krishna. He is the topmost person, right? Parma. He is the first person, and he is the ईश्वर. ईश्वर में सबसे टॉप पे. Everyone has a controller, right? अब एक IAS ऑफिसर भी है अगर, जो कि पूरी स्टेट को देख रहा है, उसके ऊपर भी वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहा है. मिनिस्टर आगे कैबिनेट को रिपोर्ट कर रहा है, आगे कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट. सो एवरीवन हैज वन कंट्रोलर ओवर द अदर, बट कृष्णा इज द टॉप मोस्ट. प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट अगेन अगर मैं उसके एग्जांपल लूं, तो प्राइम मिनिस्टर अगेन तुम्हारे पास ही आता है वोट मांगने के लिए. अगर अच्छा काम नहीं करेगा, राइट, अगले अगले 5 साल नहीं मिलेंगे उसको. सो ब्रह्मा जो कि जीवा है, तो फर्स्ट जीवा, राइट, ही हिमसेल्फ इज सेइंग दैट ही इज द ईश्वर परमा कृष्णा. सो ही इज द टॉप मोस्ट कंट्रोलर. तो अब फुलिशनेस की बात हो रही है, हमें लगता है कि यार नहीं, हम तो फुलिश नहीं है, हमें थोड़ी सी फिलोसफी हमने पढ़ ली है ना, 1 साल हो गया भक्ति इसमें वृक्षा में, तो हमें तो फिलोसफी पता है. हम कौन सा फुलिश है, हम तो मानते हैं उनकी फॉर्म, हमारे सामने हम पहचान लेंगे उनको, राइट. वो बोल रहे हैं कि पुअर फुलिश, वो फुलिश हैं जो कि उनकी फॉर्म्स, नेम्स और एक्टिविटीज को, हमने तो सारी एक्टिविटीज पढ़ी हैं, कृष्णा बुक पढ़ ली, हमने भगवत गीता भी पढ़ ली है, हमने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी कर लिया. हम फुलिश नहीं है, हम तो उनको पकड़ लेंगे जब हमारे सामने आएंगे. बट इस पे मैंने थोड़ा मेडिटेट किया, बट एक्चुअली अगर हमारे सामने कृष्ण आएंगे, क्या हम उनको देख पाएंगे? उन्होंने लिखा है फॉर्म, नामानी रूपानी,
namani rupani, plural, it's a plural word, right? So multiple names and multiple forms हैं उनकी. अब जैसे मैंने उसमें नरसिम्हा चतुर्दशी वाली क्लास में बताया था, राइट? अगर वो पुजारी जी के पास आके वो बैठ गए नरसिम्हा देव, राइट? तो अगर आप सो रहे हो रात को और आपके पास आके वो नरसिम्हा देव बैठ जाएं, सोचो आप पहचानोगे, आप उनसे हक करोगे उनको कि आप भाग के एकदम हार्ट अटैक ही आ जाएगा, शेर बैठा आपके पास आपके पास इतना बड़ा, राइट? तो आप रादर देन जिसको आप एडमायर कर रहे हो, जो नमस्ते नरसिम्हा या रोज सुबह उठ के जिसकी आरती कर रहे हो, वो अगर आपके सामने आ जाए, विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज? वो होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. वो भी छोड़ो, चलो मैं कहता हूँ चलो वो तो चलो मैंने थोड़ी उग्र फॉर्म बता दी, राइट? अगर आपके सामने बाल गोपाल छोटे से कृष्णा आ जाएं, विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम एज अ गोपा आ जाएं? राइट, वी विल नॉट बी. अरे हमारी क्या बात है, ब्रह्म विमोहन लीला सबको पता है हमें, है ना? ब्रह्मा जी हिमसेल्फ जिन्होंने कृष्णा को देखा है, जिन्होंने मेडिटेट किया है, ही हिमसेल्फ सॉ कृष्णा, राइट? तभी उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी है. उनको नहीं पता चल रहा ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ कि वो एक दूसरे को वो एज अ गोपा ही एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं. वो समोसा खा रहे हैं, उसके मुंह से निकाल के अपने मुंह में डाल रहे हैं. वो आम खा रहे हैं एक दूसरे का. जी देख रहे हैं, अरे यार ये ईश्वर परमा कृष्णा, इसके लिए लिखा था मैंने. नहीं, ये हो ही नहीं सकता. दैट्स व्हाई ही आल्सो गॉट bewildered, राइट? सो क्या ब्रह्मा फुलिश हैं जिसके मुंह से इतने वेदा निकले हैं, राइट? सो यहाँ से पता चलता है कि कितनी नॉलेज इज रिक्वायर्ड and what kind of how we can acquire that knowledge, that will come later. But that's why we all are foolish. Number one, we should agree कि हमें लगता है कि हमें बहुत पता है, but जितना पता है that is not even 0.00001%. So as I said कि ब्रह्मा जी को खुद नहीं पता चला, तो हम कौन होते हैं उनको वो पता करवाने वाले, उनके ट्रांसीडेंटल नेचर को जानने वाले. प्रभु जी, और एक एग्जांपल है इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इज कर्मा बाई, जो खिचड़ी बना के रोज खिला रही थी. प्रभु जी इज कमिंग साक्षात टू ईट द खिचड़ी व्हिच शी कुडंट रियलाइज इवन दो शी वाज सच एन एलिवेटेड डिवोटी. करेक्ट, एग्जैक्टली. एक और भी एग्जांपल थी ऐसी, मैं भूल गया कौन से गोस्वामी थे, कौन सा एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी थी, बट उनका खीर खाने का दिल हुआ और एक लड़का आया, वो उनको खीर दे गया. बाद में उन्होंने खीर खाई और उसके बाद उनको, आई डोंट नो, मेरे को पूरी स्टोरी याद नहीं है, ब्रिजेश प्रभु से पूछेंगे, बट समहाउ देन ही रियलाइज्ड कि यार इट वाज कृष्णा ओनली हु गेव मी दैट. एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ लाइक दैट कि यार मैंने, हाउ कैन आई मिस कि कृष्णा मेरे सामने आए, मुझे खीर देके गए और आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ हिम. सो दिस इज हाउ इट इज. दुर्योधन के सामने हर टाइम कृष्णा थे, राइट? और कितने लोगों के सामने थे, कोई रिकॉग्नाइज कर पाया नहीं. तो you need to have some special powers to get that, to understand him. तो और इसमें बात हो रही है कि टू टाइप्स ऑफ मटेरियलिस्टिक्स की, टू क्लासेस ऑफ मटेरियलिस्ट्स. तो उसमें फ्रूटेटिव वर्कर्स हैं और एम्पिरिकल फिलोसोफर्स हैं. तो फ्रूटेटिव वर्कर्स आर लाइक द कर्मकांडीज, राइट? जो कर्मकांड करते हैं. और empirical philosophers जो who just speculate, who just try to know the Lord by speculation, right? So both are basically, I mean, they are in ignorance only. I mean, they don't know, with such limited knowledge they can't do that. फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलते हैं स्पेकुलेट करके, कि कुछ भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है उनके पास थोड़ी स्पेशल पावर्स थी, राइट? तो उस वजह से हो गया. दे जस्ट कंसिडर हिम जस्ट अ किंग. लाइक मेरे रिलेटिव में वो बोलते हैं हाँ राम भगवान कौन थे, राम भगवान हिस्ट्री की बुक्स उठाओ, ही वाज जस्ट अ किंग ऑफ अयोध्या, राइट? नथिंग मोर देन दैट. तो बट उनसे पूछो फिर बाद में कि वो पुल कैसे बन गया, पुल के अब नासा में इमेजेस आ रही हैं कि पहले पत्थर आए बाद में उसमें मिट्टी आई. तो they don't have any answer to it, but they just keep on saying that they are just the normal beings just like us. So that is all because of the ignorance and poor fund of knowledge. So how we can gain knowledge? By reading Bhagavatam, by doing by reading the shastras. We have so many literatures and shastras, and provided they are bona fide, right? So
Yep, that's about it. I think everything is covered. So, yep. All right. Any questions, comments here till here? No. Let's go quickly. Saved dhatu पादविं परस्य दुरंत वीरस्य रथांगपाणे यो माया संततायनुवृत्तया भजते तत्पाद सरोज गंधम. Only those who render unreserved, uninterrupted, and favorable service onto the lotus feet of Lord Krishna, who carries the wheel of the chariot in his hand, can know the creator of the universe in his full glory, power, and transcendence. Right? So, अब बताया कि कौन जान सकता है, ये तीन क्वालिटीज जिसमें हैं वो जान सकता है. अब वो तीन क्वालिटीज अगर हम में हैं, then we'll be able to know and we'll come to know whether we have these three qualities or not by reading the purport. Okay, who wants to read? Yes, please. Only the pure devotee can know the transcendental name, form, and activities of Lord Krishna, due to their being completely freed from the reactions of fruitive work and mental speculations. The pure devotee have nothing to derive as personal profit from their unalloyed service to the Lord. They render incessant service to the Lord spontaneously, without any reservations. Everyone within the creation of the Lord is rendering service to the Lord indirectly or directly. No one is an exception to this law of the Lord. Those who are rendering service indirectly, being forced by the illusionary agent of the Lord, are rendering service unto him unfavorably. But those who are rendering service unto him directly, under the directions of his beloved agent, are rendering service unto him favorably. Such favorable servitors are devotees of the Lord, and by the grace of the Lord, they can enter into the mysterious regions of transcendence by the mercy of the Lord. But the mental speculators remain in the darkness all the time. As stated in Bhagavad Gita, the Lord himself guides the pure devotee towards the path of realization due to their constant engagement in loving service of the Lord in spontaneous affection. That is the secret of entering into the kingdom of God. Fruitive activities and speculations are no qualifications for entering. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So, अब इसमें तीन वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अनरिजर्व्ड, अनइंटरप्टेड एंड फेवरेबल. अब अनरिजर्व्ड का क्या मतलब होता है? अनरिजर्व्ड का मतलब होता है अनकंडीशनल, और where there are no expectations, no motivation, no external motivation, no expectations. Right? For example, जैसे ट्रेन की टिकट होती है. जब ट्रेन की टिकट आपने रिजर्व करवाई होती है, तो आप ऐसे चौड़े होके बैठ के जाते हो कि यार हाँ भाई मैंने रिजर्व करवाई हुई है ये सीट, और मेरी ये वाली विंडो सीट है, और ये व्हाटएवर ये सीट नंबर है, और मुझे यहाँ पर ही बैठना है, और मेरे को पूरी सीट मिलनी चाहिए, और जो भी सर्विसेज हैं मुझे पूरी मिलनी चाहिए. अब आपकी ट्रेन की टिकट रिजर्व नहीं है, राइट, और आप वेटिंग में गए हो या आप ऐसे ही गए हो, फिर आपको कहीं भी कोई भी कोना ट्रेन में मिल जाए, you will just go there, you will just sit there and you will just travel because you haven't reserved. So that is the meaning of unreserved. So we should serve the Krishna in unreserved, without expecting anything from him. यार अच्छा मैं कर रहा हूँ, अब मैंने आज माला करी है या व्हाटएवर आई डिड, अब मेरा दिन अच्छा निकलना चाहिए भाई. अब मैंने आपको देखो सुबह उठ के मैंने प्रायोरिटी पे लिया आपको, राइट. अब मेरे दिन में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. यू हैव टू टेक केयर. इट्स ओके, यू कैन से दैट, बट यू शुड नॉट हैव दैट एक्सपेक्टेशन यार ये कर रहा हूँ तो मैं तो डिवोटी हूँ अब, राइट. वो मोहम्मद अजरुद्दीन की तरह ऐसे कॉलर ऊपर करके नहीं चलना है अब कि यार अब तो मैं डिवोटी बन गया हूँ तो अब सब कुछ बढ़िया होगा मेरे लाइफ में, and I expect now something from you. If that should not be there, if that quality, if you have that quality in you, then yes, then you can
see him in his full glory, power and transcendence. Right. Next come is uninterrupted. अब uninterrupted का मतलब क्या है कि incessant service, right? Incessant service to the Lord spontaneously, कि 24 घंटे हम भगवान की सर्विस करते रहें. Is that possible for a grihastha? It is not possible, especially in Kali Yuga, right? So what we can do in this part is कि at least we should chant daily and chant the prescribed rounds daily and chant the rounds, all the 16 rounds together. ऐसा नहीं कि 8 अभी कर लिए, 8 शाम को करेंगे या 8 रात को करेंगे. Because what happens, वो जो मैंने एक लेक्चर में सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि 8 जो आपने कर लिए और 8 जो आप बाद में कर रहे हो, they try to meet each other and as a result वो आपका जो दिन होता है वो छोटा हो जाता है. और क्या बोलते हैं वो कि कृष्णा क्या बोलते हैं कि तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में. तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में. Right. So you should do all those 16 rounds in one go, or whatever the numbers you are doing, like 8 कर रहे हो तो 8 या 4 कर रहे हो तो 4, मतलब अपने एक साथ करो and with full attentively and रोज करो. और that is just chanting, right? और बाकी के जो 22 घंटे हैं आपके, उसमें भी if not एटलीस्ट एक रूटीन होना चाहिए कि यार एटलीस्ट एक गीता का वर्स या 2 गीता के वर्स और वट एवर, देयर शुड बी समथिंग कंसिस्टेंसी. सो दैट इज व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम अनइंटरप्टेड इज कंसिस्टेंसी, दैट वी डू दैट थिंग डेली. वी डोंट लेट, जो हमने फायर इग्नाइट की है, जो फ्राइडे को फायर इग्नाइट होती है और जो थोड़ी बहुत ट्यूसडे को होती है, तो उस पे पानी तो डलेगा ही, पर उस पे पानी थोड़ा कम डालें. पानी कम कैसे डलेगा? अगर हम रोज उसको और जलाते रहेंगे. Right, so that is uninterrupted is very important, right? Next is favorable. अब favorable का purport में लिखा उन्होंने, प्रभुपाद जी ने, कि favorable is when you are directly serving Krishna. See, any which way we are serving Krishna, either we are serving directly or indirectly. How indirectly? Because everyone is part and parcel of Krishna. If we are serving our wife or our kids or our husband, तो उस केस में भी we are serving Krishna indirectly, but that is unfavorable, right? Because there is nothing spiritual about it. We are just serving them, that's it. But yes, अगर आप उसमें spirituality add करते हो, then yes, it is good. But direct service is what is recommended to know Krishna in his full power, right? And that is a secret of entering into the kingdom of God. All right. Any questions, doubts, comments? Else we'll move. Illusionary agent of the Lord, वो point नहीं समझा. Is that Maya he is referring to? कहाँ पे? Favorable. Forced by the illusionary agent of the Lord are rendering service unto him. That is Maya. Exactly. Yes. This one, right? Those who are rendering forced by the are rendering unfavorably. हाँ. तो जैसे ब्रिजेश प्रभु ने पहले बताया ना कि at any given moment you are either serving Krishna or you are serving Maya. So that illusory energy is nothing but the illusory agent of the Lord is nothing but Maya. So when you are serving Maya, you are serving the Lord unfavorably. Yeah. So, but because Maya is again the energy of the Lord, right? So, any which way, anything Bhagavad Gita में कहा है ना, Shri Krishna, anything animate or inanimate belongs to me. So, in any case, you are serving him, but the question comes only whether you are doing it favorably or unfavorably. Yeah. All right. So the next one is 39.
अथे धन्य भगवंत इत्थमं यद्वासुदेवखिला लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः. Only by making such inquiries in this world one can be successful, and perfectly cognizant for such inquiries invoke transcendental ecstatic love onto the personality of Godhead, who is the proprietor of all the universes and guarantee 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death. You want to read this? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी, please. The inquiries of the sages headed by Shanuka are herewith praised by Suta Goswami on the merit of their transcendental nature. As already concluded, only the devotee of the Lord can know him to the considerable extent, and no one else can know him at all. So the devotee are perfectly cognizant of all spiritual knowledge. The personality of Godhead is the last word in absolute truth. Impersonal Brahman and localized Paramatma, Supersoul, are included in the knowledge of the personality of Godhead. So one who knows the personality of Godhead can automatically know all about him, his multipotencies, and his expansions. And so the devotees are congratulated as being all successful. A 100% devotee of the Lord is immune to the dreadful material miseries of repeated births and deaths. Thank you, Mataji. Alright, अब ये एकदम से थ्रेड चेंज हो रहा है, राइट? वो फॉर्म नेम क्वालिटी खत्म हो गई. अब वो क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी? एकदम से वो बोल रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें सौनकादि ऋषि ने क्वेश्चंस पूछे थे, 6 क्वेश्चंस पूछे थे. तो अब उन क्वेश्चंस के उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके रिप्लाई में ये बोल रहे हैं, राइट, कि फॉर मेकिंग सच इंक्वायरीज आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, बेसिकली, राइट. तो इंक्वायरीज पे है ये वर्स, राइट. तो इंक्वायरीज आर सो इम्पोर्टेंट कि जो सिर्फ इंक्वायरी ही कर लेता है, just by doing the inquiries, what you are invoking nothing but the love of the personality of the Godhead. And secondary, this is the primary thing. When you inquire, first thing you immediately invoke is the love of the personality of the Godhead, and the second thing that you invoke is, what you do is you get immunity from the repetition of birth and death, right? So this comes this is why I said this is primary, because once you get this love, you will automatically be immune from the cycle of birth and death. But vice versa is not true. When you get liberation, that it's not necessary that you will get the love as well. We have seen like Brahmavadi, right? So they just get to the layer of Brahman. That's why it is written here as well, the impersonal Brahman. So impersonal Brahman or localized Paramatma. So when you get the knowledge of the Bhagwan feature of the Lord, so Brahman and Paramatma are already covered into that, right? So those are the byproducts, you can say, right? So Bhakti Yoga is the topmost, and everything else is the byproduct of Bhakti Yoga. Right? अब next inquiries पे चल रहे थे. हाँ, तो inquiries हमें भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं और 5 हमें दी हैं कर्म इंद्रियां, राइट? तो जो 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, which are like eyes, ears, nose, tongue, everything, right? So now अगर हम कुछ देखते हैं eyes से, which is we are getting ज्ञान, if just by looking at that, is it perfect? No, it is not perfect. Why? Because for example, मैंने कोई पेंटिंग देखी,
अगर मैंने वो पेंटिंग देखी, मुझे अच्छी लगी, उसके बाद मैं पूछूंगा कि अरे यार किसने बनाई ये पेंटिंग, कैसे बनाई है, राइट? सो देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंक्वायरिंग एंड आई एम हियरिंग. So just by looking at that picture, I am not, my knowledge is incomplete. But when I inquire, my knowledge becomes full. I get to know more about that person. Then I want to meet that person. For example, अब खाना है, मैं खिचड़ी बनाते हैं रोज सुबह मंदिर में, तो खिचड़ी कई बार बहुत टेस्टी लगती है, तो पूछते हैं किसने बनाई है खिचड़ी, राइट? तो और कैसे, फिर वो कहते हैं अच्छा इन प्रभु ने बनाई है, तो वो उनके पास जाते हैं, फिर अच्छा कैसे बनाई प्रभु जी, इसमें बहुत टेस्टी बनाई है तो खिचड़ी, राइट? सो अगेन इट्स जस्ट द टेस्ट वर्ड्स, टेस्ट वाली ज्ञानेंद्री, टंग इज coupled with inquiry, hearing. So that is the importance of inquiry. In every gyanendri, it is incomplete, that gyan will be incomplete unless you add inquiry to it, unless you hear about it. Right, so that is why Suta Goswami is congratulating them that you have inquired. So what you have done is you got the love and you got rid of the birth and death as well, right? तो और वो जब ये सौनक आदि ऋषि थे, they were very humble. In the first chapter you must have read कि when they came in, they said कि Prabhu, we don't know anything, can you please tell us? And they were rishis, right? And here are we said, we perceive that हाँ हमें तो सब कुछ आता है, right? So that is the difference, and that is why he is motivating them. That is why he is congratulating them. He is saying, yeah, so the devotees are congratulated as being all successful just by inquiring. He is just motivating. आपने बहुत अच्छी inquiry करी है, and which is guaranteeing 100%. Who guarantees here anything? और वो guarantee भी किस चीज से मिल रही है? Birth and death से, right? यहाँ पे material चीजों की guarantee नहीं होती, वो birth and death की guarantee देते हैं just by inquiring. So here in our group as well, in Brijesh group as well, so we have so many nice devotees who inquire, and how we should inquire is again, right? Every time Brijesh says Tadvidi Pradipaten Pariprashne Sevaya, how we should inquire, right? With a humble mood, not not for testing the speaker. So any inquiries, or we go to the next verse? All right, so it's 7:36. We can cover one more. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म समितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्य लोकस्य ध्यानं स्वस्ति अन्यं महत्. This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God and is compiled by Srila Vyasadeva. Okay, you want to read? Come, read. This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it is compiled by Srila Vyasadeva, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Thank you. All right. Anyone wants to read the purport? Let him read, Prabhuji, if he's sorry. He ran away. Only if he's available. So beautiful. His voice is so beautiful. You can read, Mataji. Mithil Prabhuji is back. Mithil Prabhuji, do you want to read? Shall I go ahead? Okay, I'll go ahead. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is the spotless, sound representation of all Vedic knowledge and history.
There are selected histories of great devotees who are in direct contact with personality of Godhead. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Shri Krishna and is therefore non-different from him. Bhagavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. Thereby we can derive the ultimate blessings of the Lord through its careful and patient study. As God is all light, all bliss, and all perfection, so also is Srimad Bhagavatam. We can have all transcendental light of Supreme Brahman, Shri Krishna, from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of transparent spiritual master. Lord Chaitanya's private secretary, Srila Swarupa Damodar Goswami, advised all intending visitors who came to see the Lord at Puri to make a study of Bhagavatam from the person Bhagavatam. Person Bhagavatam is the self-realized bona fide spiritual master. And through him only can one understand the lessons of Bhagavatam in order to receive the desired results. One can derive from the study of Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from a personal presence of the Lord. It carries with all the transcendental blessings of the Lord Shri Krishna that we can expect from him, from his personal contact. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Right. So, अब श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया जा रहा है कि that is the literary incarnation of the Lord. And इसमें दर्शन पद्धति के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगा कि जब हम कृष्ण भगवान को देखते हैं, so we should look from bottom up. सबसे पहले उनके feet, then his legs, and then body, and then his lotus face. Same thing we should do with the Srimad Bhagavatam as well. If you have at home, if it is like if it is in one row, that is fine. But if it is stacked in a vertical order, then what you should do is you should put the first canto in the bottom, and then second, and then 10th on the 11th on the top. 10th canto is called the lotus face of the Lord, and first canto is the feet, and then subsequently. So this is how you should keep Srimad Bhagavatam at home as well, and you should treat him as a deity only, not an ordinary book. तो मैंने जब श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करी थी पढ़नी, तो see, the problem with us is we don't take these things, we don't value these things, but this is the most valuable thing what we have right now. इससे इम्पोर्टेंट और कोई चीज नहीं है. बट जब भी वो क्या बोलते हैं ना अमोघ लीला प्रभु के, फ्री में मिल जाती है ना जो चीज, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती. तो एंड जो इजीली एक्सेसिबल, इजीली मिल जाती है, राइट, तो उसकी चीज की वैल्यू नहीं रहती. तो मैं फर्स्ट क्लास थी मेरी, तो मैं भागवतम उठा के चला गया. उसके बाद प्रसादम खाने गया, तो वहां पे प्रसादम खाने पे मैंने भागवतम को ना नीचे रख दिया. मतलब वहां पे बैठा था, मैं प्रसादम खाने लगा. तो एक ब्रह्मचारी है, वो भी नहीं है यहाँ पे, वो इंडिया गए हुए हैं, काफी अच्छे, मतलब मेरे से काफी क्लोज हैं. तो भागवतम को नीचे रखा हुआ है, और मैंने कहा क्या करूं मैं, खाना ऊपर कैसे खाऊंगा. तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आई पुट इट इन अ बैग एंड देन स्टार्टेड गोइंग देयर. तो पहले क्लास हमारी वो ऑनलाइन नहीं होती थी कोविड से पहले, तो इन पर्सन होती थी टेम्पल में. So then I realized, and he was a brahmachari in the temple, and he was not able to attend the Bhagavatam class because of his other responsibilities. So he knows the value. He said, "Yaar, you are so fortunate that you are doing this, you are reading this, you are studying this. But I don't know. Please pray for me that when I will get a chance to listen to or to read Srimad Bhagavatam." Because brahmacharis, we have like very less, like 10 or 9 in number, and they have so many responsibilities to do preaching and whatnot, book distribution. So अब बात करते हैं, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट हो गया. तो श्रीमद् भागवतम, हाँ, तो we should treat Srimad Bhagavatam as the Lord Krishna himself.
राइट. और अब उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि we should study Srimad Bhagavatam from the person Bhagavatam, which we are doing, right? I am not Bhagavatam. This purport which we are reading is done by Srila Prabhupada. So he is the Bhagavatam. He's a self-realized, bona fide spiritual master. So what we are doing, what we are reading from person Bhagavatam is Srila Prabhupada, who no one can question that he was not a self-realized and bona fide spiritual master. Right. हमें लगता है कि जब भी अच्छे बंदे की बात हो रही है तो उसमें मैं हूँ अच्छा बंदा, है ना, कोई भी स्टोरी में. और जब किसी डेमन या उसकी बात हो रही है, वो नॉन डिवोटीज कर्मी लोग की बात हो रही है. सो बट दैट इज नॉट द केस. अब वो क्या है कि हमें भागवतम से क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि दैट विल ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम ये किसी और भागवतम और भी बहुत है मार्केट में, अगर वहां से आप पढ़ोगे तो दैट will not bring the transformation. Reading this Bhagavatam will bring the transformation. और इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो भागवत सप्ताह करते हैं. They don't know the ABC of Bhagavatam. They only refer to the 10th canto. They do just some kirtan and वो अपना 5-6 लाख 10 लाख जितना भी लेके they'll just enjoy. So that's a business for them. That's Srila Prabhupada is not asking any money from you for you guys, for us to listen, right? Or for us to read. That is for the love of Krishna. So when you do it, when you do a service without any reservation, right? पिछले वर्ष में आया, without any reservation, without any expectation, without any money, that brings the true love for Krishna. Right, that's why we also invite some guests in our Bhakti Vriksha as well, so that unki consciousness is much pure, right? And when they deliver, when they said something, when they say something, it brings transformation. Like Ojasvi Prabhu aaye, Swaran Krishna Prabhu aaye, they said, okay, chant, and everyone started chanting in the morning. So that's about it. All right, any questions, comments? Otherwise, we'll close. While we're talking about how powerful Srimad Bhagavatam is, Prabhuji, I just wanted to know the meaning of Srimad in front of it. Srimad, Shri usually हम बोलते हैं auspiciousness को. Auspiciousness is की संस्कृत जो है, that is called Shri. So that is what, like, it brings auspiciousness, everything good, everything spiritually progress, you progress that. So that is why we call it Srimad Bhagavatam. Anything else? सॉरी प्रभु जी, मैं आज कुछ नहीं सुन पाया, मुझे फोन आ गया था तो I saw that. मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा पूरी. रिकॉर्डिंग है, right. Cool. All right then. श्रीला प्रभुपाद की जय, सामने वृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Thank you for the beautiful class, Prabhuji. Thank you. Prabhuji, thank you. Thank you.